Okay, finally चल चालू करते हैं bro. So this is the third time we are recording this and now I'm really annoyed. तो मैं intro नहीं देने वाला वापस. But anyway, welcome back to the Trial Ball podcast, a cricket podcast, and probably the most inconsistent podcast on the internet. So let's begin. Today's topic of conversation is the IPL auction 2023, which is supposedly the mini auction, but there was nothing mini about it because we saw the IPL highest bid record break four times over, with four players going at a bid of more than 16 crores rupees. So, Dave, what are your thoughts on this IPL mini auction that happened yesterday at the time of this recording? So I didn't watch live, but I was अपडेट्स देख रहा था। मैं शॉक हो Right. गया था कि सैम करन 18.5। मैं इस बात से शॉक नहीं था कि उसको इतने पैसे मिले, ऑब्वियसली ये सबने एक्सपेक्ट किया था। इस Hmm. बात से शॉक था कि स्टोक्स से ज्यादा करन को मिला। Hmm. स्टोक्स established player है ऑलरेडी, also bring in leadership qualities, while Cameron Green, Sam Curran, these are youngsters. This shows that franchises का फोकस यंगस्टर्स पे है। दे वांट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, Right. जो फ्रेंचाइजी खुद उनको ग्रूम करे और बड़ा प्लेयर बना आगे जाके। वी हैव सीन मुंबई इंडियंस डूइंग दिस विद हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, आरआर डूइंग विद संजू सैमसन। Right. सो दिस आईपीएल, दिस ऑक्शन वाज youngsters oriented auction. Yeah, we saw with it was pretty evident because Sam Curran went for 18 point what? How many? Remind me again. By 18.5 crores, 18.5 crores. which is insane money, yeah. Like, and I just saw a meme on internet which showed how uh, Britishers are again looting India. They are back with यू नो अभी उन लोग क्रिकेट को भी कॉलोनाइज करने वाले हैं इंडिया से विच वाज वेरी फनी क्योंकि वी सॉ बेन स्टोक्स going for big money. We saw Sam Curran going for big money, and one more English player, uh, Harry Brook for 13 Harry Brook, for crores, 13 13 crores. plus. जो जो कि पागलपन है ब्रो. लाइक उसको his breakout year was 2022 और यही साल में ही वेंट फॉर 13 crores. अगर 13.25. 13.25, अगर ये 3 साल पहले मैं बोलता कि ये साल जो इनफॉर्म बैट्समैन है वो 13 करोड़ में बिका है आईपीएल में, पीपल वुड हैव लाफ्ड एट मी. बट दिस इज जस्ट इनसेन कि how much money and how much revenue IPL is pulling through, because IPL as a sport, as an event, as a show is very popular in India. और उसका जो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू है इज द मोस्ट एवर in any cricketing league in the entire world, right? So it is like fair to see these players go for such high bids. But let's not waste much time, and let's just dive right into the big moves that we saw. So let's just start with Chennai Super Kings. Okay. And Chennai Super Kings this year, like every auction, they don't change much, right? And this year, क्योंकि Robin Uthappa is not there, right? And Dhoni probably will not play in the next edition, right? So they are in kind of this segue period, right, where they're trying to rebuild their squad from the scratch. CSK is this year, CSK is deja vu for rising Pune Super Giants fans. Because Exactly, bro. Stokes, Rahane, Ajinkya Rahane is also in CSK now. Rahane, Who Stokes, went and for Dhoni's base combination. price? Who went for base price? And So these three are back. I forgot, but Rahane has an IPL century. Can you believe Yes, that? yes, two centuries, I guess, both for Rajasthan Royals. Yeah, that is insane. Why are we not appreciating this player enough? Like, why? He went for like base price, and he's not even probably going to play
इन आईपीएल दिस ईयर, क्योंकि वो बेंच पे ही सड़ने वाला है ब्रो. एनीवे, मोमेंट ही कंटिन्यू. लेफ्ट आरआर वो बेंच पे ही चढ़ रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. एंड वो भी ही लेफ्ट आरआर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. दे ट्रेडेड अजिंक्य रहाणे to I don't remember. He was supposed डीसी, to दिल्ली कैपिटल्स. Delhi Capitals. Yeah, he got traded. There was Insane. some rumor that when Ganguly was the coach or mentor of Delhi, he asked Rahane to join. पर उसके बाद सौरव गांगुली प्रेसिडेंट बन गया, दिल्ली छोड़ दिया उसने, और रहाणे बेंच पे आ गया. Yeah, man. I really want to see Rahane play this year. An interesting pickup for This Chennai. year CSK looks very very strong with Yeah. Stokes coming in, and the debate of Jadeja versus Stokes now finally ends. Who is the better all-rounder? This finally ends. वरना जडेजा के फैंस हमेशा बोलते थे कि जडेजा इज बेटर, स्टोक्स के फैन बोलते थे स्टोक्स इज बेटर. Why नाउ why दैट why does दे it end? बोथ आर, Why does it end? एटलीस्ट जडेजा फैंस अभी डिबेट नहीं करेंगे हु इज बेटर. नहीं, why स्टोक्स ऐसे भी क्यों? अपना हो गया ना, स्टोक्स अपना हो गया. वरना अच्छा. पहले बोलता था लोग अच्छा, Stokes ये is अब सब not ये at the other side anymore. ये स्टोक्स अभी अपना हो गया, इसलिए दिस डिबेट फॉर सम टाइम इट एंड्स. जस्ट Yeah. इट विल बी ट्रीट टू वॉच बोथ टुगेदर. इन दोनों का ही फील्डिंग, प्रोबेबली टू बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड, Hmm. हवा में उड़ते दिखेंगे यहाँ वहाँ. Yeah, so one more interesting pickup for Chennai this year is Kyle Jamieson, right? He hasn't played T20 cricket in a long time. We haven't seen him in at the center. It, I think in it was past a 2 years. surprise. Kyle Jamieson got picked, but Blessing Muzarbani did not get picked. Do you think it's a bias towards bigger nations? Just because Jamieson comes from New Zealand, Muzarbani comes from Zimbabwe, he did not get picked. So do you think the franchisee prefer players from big nations? Uh, it could be, but I think this Jamieson pickup was purely based on uh, this whatever the management decided, like what kind of a squad they wanted to pick, right? Because I think Jameson fits much better in the Chennai system than, let's just say, Muzarpani. I think that was this, but I get your point. I think it could be uh, like we don't see Bangladeshi players going for big money, right? Or we don't see Afghani players going for big money, but we see like let's just say Sam Curran going for big money, right? I think I get your point. It's a valid point, but I don't think that's the case that's the case here as far as Kyle Jameson is concerned, because he has not even played T20 in like what, past 2 years, and now he's back. So it will be interesting to see how Chennai utilize Jameson, because let's just look at the squad. Okay, so who is going to open? It's either going to be Devin Convoy and Rituraj Gaikwad, or why am I even saying either? It's obviously going to be them, right? But We can that say, there were some people speaking about Ben Stokes opening with Ruturaj. yeah, I Stokes think, has opened in IPL and even scored a century against Mumbai Indians while opening the batting for RR. oh, really? So Stokes has experience in opening. So that would be interesting to see how do they fit their foreigners, because they have Moeen Ali, Ben Stokes, Devon Conway, Mahesh Theekshana, Ben Pretorius, मिचेल सैंटनर, वो ऑब्वियसली हर साल बेंच पर ही बैठता है, वो तो नहीं होगा. काइल जेमिसन. तो इनके चार चार चूज करना मुश्किल होगा. बट आई थिंक कि ये लोग स्टोक्स को 4 पे खिलाएंगे, मोइन अली को 3 पे, कॉनवे एंड ऋतुराज ओपन्स. तो 3 ओवरसीज स्लॉट्स इधर ही खत्म हो जाते हैं. देन दे हैव अंबती रायडू, शिवम Shivam दुबे, Dubey. एमएसडी एंड जडेजा. 8 नंबर Right. इधर ही हो गया.
then Deepak Chahar, Mukesh Chaudhary, and then they have to decide one more. I think it would be Mahesh Theeksana, I feel. Or Victorious. Mahesh Theekshana will be more suitable for Chepauk pitch. चेन्नई जो Right, स्पिनर्स के साइड होता है हमेशा, महेश right. तीक्षाना विल बी ग्रेट फिट. हम्म. बहुत बैलेंस स्क्वाड है ये. सो बैलेंस स्क्वाड है, ऑलराउंडर्स भर भर के है. मोइन अली एग्जैक्टली. कैन बोल, जडेजा कैन बोल, दुबे कैन बोल, स्टोक्स कैन बोल. So this या gives a captain a lot of options. या Also, एग्जैक्टली. Stokes can be their next captain. या I think वो एक उसी नजर से लिया होगा स्टोक्स को. But yeah, do you see Dwayne Pretorius playing or I fitting think himself in the squad? Pretorius versus Tikshana will be purely based on conditions. चेन्नई, अगर मैं मैच चेन्नई में खेल रहे तो तिक्षाना मस्ट प्ले. Yeah, इफ यू कम टू जयपुर विच इज मोर अ पेस फ्रेंडली विकेट, वहां पे प्रिटोरियस खेलना चाहिए. जस्ट but और Pretorius अभी तो also, इम्पैक्ट yeah, will come जैसे to that. But Pretorius also give you that a बैटिंग slight, ऑप्शन. yeah, slight hint of batting बट दे option as well. ऑलरेडी, MS धोनी 8 पे आ रहा है, they वही already क्या have a lot of batting. They don't need. Chennai is very the depth, the batting depth is very powerful for Chennai this year. They I don't think, need that batting option. yeah, I think Chennai is clearly the favorites this year, right? I We think we can should see, not underestimate SRH. yeah. So They let's got just their top jump six straight to SRH then. settled. Okay, yeah. So SRH got Harry Brook for 13.25 crores. का मिडल Okay. ऑर्डर शॉर्ट है because they have Markram, they have Glenn Phillips, and they have Harry Brooks. But where do you see uh, Glenn So Phillips fitting into the for squad? me, for me, top six must be Abhishek Sharma and Mayank Agarwal. They also got a Mayank Agarwal. Yeah, also Mayank Agarwal going for another big money, Eight, eight. 8.25 crore. So Agarwal and Abhishek Sharma opens. Markram at three, Tripathi at four, Rahul Tripathi. Then Harry Brook at five, Glenn Phillips at six. Okay, they also have Top Adil Rashid six. in the squad now. Yes, he will also play, I think. Phillips, Harry Brook, Glenn Phillips, Markram, इनके तीन फॉरेन ऑप्शन हो गए. फोर्थ विल बी आदिल रशीद. दे ऑल्सो हैव मार्को यानसन एंड अकील हुसैन. तो उनका स्क्वाड काफी सेटल्ड और बैलेंस है बिकॉज एट नंबर 7 दे हैव वॉशिंगटन सुंदर. I think अभिषेक शर्मा कैन बोल टू. I think Akhil Hussain should मार्करम play कैन बोल. uh, in slightly slower pitches like Hyderabad. I think Hussain should play instead of Adil Rashid. And hear me out, because he is very disciplined bowler. Okay, and he is a slow bowler. He's not a wrist spinner like Adil Rashid. So जब ग्राउंड बड़ा है और पिच स्लो है, तो अखिल हुसैन could be a good option for बट them, don't you इफ यू think? हैव if you already have Washington Sundar, who is an off spinner, you need some variation. सो Yeah, उनका टीम अगर छः तक ग्लेन फिलिप्स है, सेवन पे वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार एट एट, नाइन इधर अकील हुसैन और आदिल रशीद, देन उमरान मलिक एंड नटराजन और कार्तिक त्यागी. तो दिस टीम इज वेरी सेटल्ड आई वुड से. जो लास्ट ईयर एसआरएस थोड़ा स्ट्रगल किया था, बट दिस टाइम दे आर लुकिंग क्वाइट गुड. ऑल्सो दे हैव टू पिक वन कैप्टन. Now that Kane Williamson is gone, they have to pick up a captain. I think who it could do be either Mayank Agarwal or Aiden Markram or Bhuvneshwar Kumar, who was yeah, I vice feel captain. Bhuvneshwar Kumar could be the captain.
क्योंकि सो इनका जो बॉलिंग बॉलिंग लाइनअप है ये तो सेट है। नटराजन विल टेक केयर ऑफ द डेथ। नटराजन और उमरान मलिक, कार्तिक डेथ त्यागी भी है, वो भी है। हाँ, भुवी भुवी तो टॉप टॉप पे अपना प्लेऑफ में विकेट ले लेगा। नटराजन और उमरान मलिक दोनों डेथ स्पेशलिस्ट है। उमरान मलिक का तो हमने देखा ही लास्ट ईयर, क्या स्किल्स है उसके, क्या पेस है। तो आई गेस बॉलिंग इज द फोर्स टू रेकन विथ। तो अगर दे कैन स्कोर लाइक 170 180 प्लस, it's SRH's game. Also in this mini कोर्स auction, SRH had the biggest purse cap of पर्स, 42 crores. सो they didn't go for Stokes, which was quite surprising. But I Yeah, think they wanted Mayank Agarwal. they also wanted Sam Curran, but he went a little out of budget because सबसे पहले उन्होंने हैरी ब्रुक को ले लिया। उसके बाद सैम करन भी जब 16 17 करोड़ चला गया, देवर लाइक ओके सर, थैंक यू। और पैसे। बजट की बजट की बात करें तो किंग पंजाब किंग्स, they still had 12 crores in their purse, still had 5 slots left, they didn't use। 12 करोड़ ऐसे ही पड़े उनके पास। so many good players went unsold, और वो नहीं लिया उनको। 5 स्लॉट्स पड़े हैं, 12 करोड़ पड़े हैं, क्या करोगे उसका? आई थिंक वो सिर्फ करण को खरीदना आए थे। हाँ, करण मिल गया, चलो ऑप्शन खत्म हमारा। हाँ, और एक दो ऐसे उठा लिए ऐसे, मोहित राठी। वो 40 लाख में, 50 लाख में हाँ, सिकंदर रजा को 50 लाख में उठा लिया, बहुत अच्छा काम किया। सिकंदर रजा डिजर्व्ड एन आईपीएल डील, या आई बट थिंक। जस्ट फॉर बेस्ट प्राइस दैट्स अ स्टील, आई वुड से। बट कहाँ खिलाएगा राजा को? बिकॉज दे हैव भानुका बैकअप, राजपक्षा, उसकी राइट? भी जगह नहीं बनती। दे हैव बेस्टो, लिविंगस्टन, सैम करन एंड कागिसो रबाडा, दिस फोर विल स्टार्ट। या ऑब्वियसली। बट दे उनका बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल है, इंडियन बैकअप्स नहीं है उनके पास। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबल 11? आई शाहरुख थिंक शाहरुख शिखर, कैन प्ले। शाहरुख एंड जितेश शर्मा, दे बोथ तो हैव। शिखर, बेस्टो, शाहरुख खान, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन, ऋषि धवन, कगिसो रबाडा, हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंह एंड राहुल चहर। सो इनके इंडियन ऑप्शंस देखे जाए तो काफी वीक लगते हैं मुझे। नॉट वीक आई वुड से, बट नॉट, these are not big names other than शिखर धवन। सो आई वाज सेइंग दैट इंडियन बैकअप काफी वीक है। अगर फॉरेनर्स की बात की जाए तो बैकअप में भानुका राजापक्सा है, सिकंदर रजा है, नेथन एलिस है। बट व्हेन राहुल इट चहर भी कम्स, है उनके टीम में। राहुल चहर को मिलेगा जगह क्यों नहीं? he will start, he will start obviously, because इनके इंडियन बैकअप देखा जाए तो हरप्रीत भाटिया, शिवम सिंह, राज बावा, मोहित हरप्रीत राठी। ब्रार, ही इज अ वेरी गुड या हरप्रीत स्पिनर, बार विल स्टार्ट, he has to start। बट बहुत मार धवन, खाता है यार वो, बहुत बहुत बट मार और कोई खाता है। ऑप्शन भी नहीं है इनके पास। धवन, बेस्टो, शाहरुख खान, लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन, ऋषि धवन, कगिसो रबाडा, हरप्रीत बार, अर्शदीप सिंह एंड राहुल चहर, दिस शुड बी द स्टार्टिंग 11। इनके अलावा मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा जो स्टार्टिंग स्टार्ट कर सके। या सो आई थिंक वो 12 करोड़ और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे, कुड हैव गॉट मोर इंडियन बैकअप्स। बट पता नहीं उनका स्ट्रैटेजी क्या था, बहुत वियर्ड स्ट्रैटेजी था। इतने पैसे हाँ। पड़े थे फिर भी यूटिलाइज नहीं किया। इवन पैसों, मेरे को टॉप ऑर्डर पे इतना डिपेंडेबल लग नहीं रहा बेयरस्टो एंड धवन। ऑल्दो बेयरस्टो बहुत अच्छा खेल रहा है, बट टेस्ट में बहुत अच्छा खेल रहा है। T20 में ही इज नॉट रियली फाइंडिंग हिज टच। तो वर्ल्ड कप और तो खेला नहीं था इंजरी की वजह से। एग्जैक्टली But और he will play his first professional cricket game in the IPL, so directly इंजरी से आ रहा है। या और शिखर धवन भी has been missing international cricket since a long time now, especially when it comes to T20. T20। Yeah, so I think पैसों, they needed a top order batsman very desperately. they जो could have got Paul Sterling, जो अनसोल्ड गया।
Yeah, Paul Sterling. Or they will, I guess, because of their batting weakness, they will play Bhanuka Rajapaksha, and बट they फिर उनको लिविंगस्टन या रबाडा को ड्रॉप करना पड़े. There's no chance they will drop Sam Curran. So hmm, Livingston, I don't think he must be dropped. Livingston अपना ऐसा प्लेयर है जो बॉलिंग अपना ये करता है. He's a bowling asset. He can bowl off spinners to lefties, leg spinners to righties. He's right. an asset, और an asset to बहुत any team. बहुत अच्छा फील्डर भी है वो, और अच्छा, और मतलब मैच विनिंग इनिंग्स भी खेल सकता है when it comes He to has bat. done it for England. And then रबाड़ा को ड्रॉप किया तो इनके पास बॉलर्स ही कौन Yeah, I think एक है. They are बैट्समैन struggling एक with backup. yeah एक I think they are missing Mayank Agarwal now a lot. They should have retained him. Now the Retained him. problems are looking clear तो for इन्होंने अच्छे से पैसे यूटिलाइज नहीं किए हैं, बट जो अच्छे से पैसे यूटिलाइज किए हैं वो टीम है राजस्थान रॉयल्स. right. सो दे वांटेड एंड पेस बॉलिंग ऑलराउंडर. उनको जेसन होल्डर मिल गया 5.75 करोड़ में. हम्म. बाकी टीम पूरी सेटल्ड है. बट पैसे बचे, स्लॉट्स बचे, क्या करे. चलो ऐसी किसी को उठा देते हैं. जो एंड रूट ऐसी किसी को उठाने के चक्कर में जो रूट और एडम जैम्पा को लिया है. भाई एडम जैम्पा क्यों नहीं खेल रहा है यार आईपीएल, मतलब इतना अच्छा उसका लास्ट टू लास्ट ईयर था उसका, वर्ल्ड कप जो रन था, वर्ल्ड कप कैंपेन वाज अमेजिंग, बट स्टिल ही वाज कुड अनसोल्ड इन द फर्स्ट राउंड. या एंड अभी भी ही वेंट फॉर वेरी लो प्राइस. इट वाज बेस प्रोबब्ली प्राइस. बेस प्राइस, या इट वाज बेस प्राइस. बोथ रूट एंड जैम्पा वेर अनसोल्ड इन द फर्स्ट राउंड. उनको बस लास्ट राउंड में उठा दिया. पैसे बचे थे, ले लेते हैं. हाँ, एंड रूट तो जो रूट का रूट तो अंडरस्टैंडेबल है अनसोल्ड जाना आईपीएल में, बट जाम्पा आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो मैन. आई थिंक जो रूट का लेना इज नॉट अ बैड ऑप्शन. जो रूट कैन बोल. राइट, बट ही वेयर कैन विल यू बोल प्ले ऑफ. हिम? डू यू थिंक ही हिज वोंट प्ले, ऑफ कोर्स ही वोंट प्ले. या ही इज ही इज नॉट ऑन द प्लेइंग. बेंच, बट ही ब्रिंग्स हिज ऑरा. लाइक एक लेजेंड तुम्हारे टीम में आ रहा है, तो यंगस्टर्स कैन लुक अप टू हिम. Yeah, we must not दे forget कैन that लर्न फ्रॉम हिम. Royals are the runner-ups of the previous रनर edition. अप, यस. But it प्लस is जॉस बटलर because, एंड yeah, it was because Josh Butler and Yuzvendra Chahal, right? And Sanju Samson, of course, a few innings here and there. But I don't think हर बार ऐसा होने वाला है. इस बार. लास्ट ईयर एम आई एंड सी एस के वेर क्वाइट वीक. इस बार एम आई भी स्ट्रांग है, सी एस के भी स्ट्रांग है, हैदराबाद भी स्ट्रांग है. तो आई डोंट सी राजस्थान रॉयल्स प्लेइंग फाइनल्स एटलीस्ट. टॉप फोर में आ जाए तो आ जाए, क्योंकि ऑन पेपर बहुत डिसेंट टीम है ये. Decent, अब और बहुत अच्छा टीम है ब्रो. Like you see Prasidh Krishna, Trent Bolt, and at your bowling attack along with Yuzvendra Chahal, who's प्लस probably लास्ट ईयर प्रॉब्लम क्या हुआ था. टीम्स वे पिक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर होम ग्राउंड्स. बट लास्ट ईयर होम ग्राउंड पे नहीं खेले थे. सारे मैचेस मुंबई में खेले थे, जो काफी बैटिंग फ्रेंडली है. बट दिस right. ईयर होम ग्राउंड्स में खेलेंगे. एंड इफ यू सी जयपुर, it's more a pace friendly wicket. So Prasidh Krishna, Trent Bolt, and Jason Holder, these slower balls will work very, very fine at Yeah, Jaipur. Jason, coming to Jason Holder, an interesting price for Holder. Do you think it's justified? He went for Yes, because last year उसने परफॉर्म नहीं किया था. 5.75 इज वेरी, थिंक अच्छा डील मिला. नॉट टू एक्सपेंसिव, नॉट टू लो. yeah. So you think Holder will play Holder along with Trent Bolt? ही Uh, मस्ट प्ले. और मेरा, मैं ये सोच रहा where था do कि you आरआर कैन. where do you fit Shimron Hetmeyer then? सीधे प्लेइंग इलेवन कैन लुक लाइक बटलर, जायसवाल, संजू, देवदत्त पडिक्कल at 4. Then they got Hetmeyer at 5. रियान Okay. पराग at 6. रियान पराग अभी रिसेंटली बहुत अच्छा किया है डोमेस्टिक में. अबे यार देन उसको. जेसन होल्डर एट 7. अश्विन एट 8. जो बैटिंग डेप्थ मिल गया होल्डर के आने से.
हम्म जो लास्ट ईयर बैटिंग डेथ में स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज अश्विन साथ पे आ रहा था, मिडिल ऑर्डर में आ रहा था। अभी हम्म होल्डर के आने से वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। देन चहल एट 9, बोल्ट एंड प्रसिद्ध कृष्णा। do आई you फील think uh, डीप। do you think Zampa will play? जैम्पा नहीं खेलेगा, इट्स ऑलरेडी, दे ऑलरेडी हैव अश्विन एंड They चहल। also तो have जैम्पा Kuldeep Yadav. वो दूसरा कुलदीप यादव है। अच्छा दे दे ऑल्सो गॉट मुरुगन अश्विन तो, अनदर हाँ लेग स्पिनर। दे ऑल्सो हैव केसी करियप्पा, अनदर लेग स्पिनर। तो इतने स्पिनर्स क्यों चाहिए जयपुर में, मेरे को पता नहीं। पर ठीक है, ऐसे ही पैसा बचाता तो ले लिए। हम्म तो Jaiswal, देख, Jaiswal, do you think will play? यस ऑफ कोर्स जायसवाल Will विल open. स्टार्ट विद, बट ऑल्सो व्हाट दे कैन डू इज, प्लेइंग इलेवन में तीन ही जन चूज करो। व्हेन यू आर प्लेइंग एट चेन्नई, सिर्फ तीन फॉरेनर्स चूज करो, एंड हैव होल्डर एंड जैम्पा एज सब्स्टिट्यूट। एसेस द पिच, अगर स्पिनर फ्रेंडली है, जैम्पा को डालो अंदर। Right. because because they have players like Navdeep Saini and Kuldeep Sen who can replace Holder in the starting 11. So Yeah, RR can go with three overseas. फिर भी you इनका know, बैलेंस बिगड़ नहीं रहा। lot of these teams doesn't make sense on paper, but just because of that one rule change, the impact substitute, Impact. the whole dynamic of the team can change, right? With just one substitute. Like uh, in this squad, if you want Riyan Parag, you can bench him, right? You can bring him in the batting when you're batting, right? And you can play with let's just say one more spinner like Murugan Ashwin or KC Karyappa if कैसे you करें। want, right? And you can bench Karyappa in the batting side and bring in Riyan Parag. Like the entire dynamic of the squad changes just because of this one rule, right? But I still feel Royals are going to make it into the playoffs. I don't know, but something tells me that they will make it into the playoffs. Let's see what happens. So RR only struggles with Indian backup batters. Bowling options है, नवदीप सैनी है, KM आसिफ है, and Right. कुलदीप सेन ऑफ कोर्स, द राइजिंग स्टार कुलदीप सेन, जिसकी स्टार्टिंग 11 में मेरे को जगह दिख नहीं रही है। Yeah, Kuldeep Sen is also a very good option. So I think it was a good option for RR. नेक्स्ट टीम इज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिन्होंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है, बस आ गए ऑप्शन में देखने के लिए तमाशा दूसरों का। तो यहाँ वहाँ एक दो प्लेयर्स मिल गए, उठा लिया। They went for बिकॉज Reece Topley. रीस टोपली इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड आई वुड प्ले हिम अहेड ऑफ जॉश हेजलवुड। रीस टोपली इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्लैंड बॉलर्स इन T20 क्रिकेट। सो अगर Right. मैं इस टीम का कोच हूँ तो आई वुड प्ले हिम अहेड ऑफ जॉश हेजलवुड। Right. So also along with Reece Topley, you have Will Jacks. ठीक है जो इज एन ऑलराउंडर। अगेन बॉलिंग ऑप्शन देता है और बैटिंग भी बहुत अच्छा है. So इज who are the बिकॉज four? Yeah, yeah. नाउ देयर सस्पेंस इज ऑन ग्लेन मैक्सवेल, जो एक पार्टी में इंजर्ड हो गया था। सो नॉट सो श्योर इफ विल बी फिट फॉर IPL और नॉट। इवन इफ इज नॉट फिट, दे हैव विल जैक्स। आई थिंक विल जैक्स को इसीलिए लिया कि मैक्सवेल का बैकअप बन सके। Yeah. टॉप फोर आई थिंक, इफ मैक्सवेल इज फिट, कंसिडरिंग मैक्सवेल इज फिट, फैफ डू प्लेसी कैप्टन, ग्लेन मैक्सवेल, वनिंदु हसरंगा, फोर्थ आई वुड पिक रीस टॉपली। Not even इसका David इंडिया में Willey रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। डेविड विली डजंट स्टार्ट। and रीस Finn टॉपली का Allen. इंडिया में, What about Finn Allen? What about Jace Hazelwood? जॉश हेजलवुड, आई एज आई सेड, आई वुड प्ले हिम, आई वुड प्ले टॉपली अहेड ऑफ हिम, बिकॉज टॉपली का इंडिया में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और वर्ल्ड कप में खेल नहीं पाया था इंजरी की वजह से। इट इज अ वेरी ग्रेट ऑप्शन। But जॉश एंड हेजलवुड का प्लेऑफ्स में बहुत विकेट टेकिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है.
बट अगेन डेथ में जॉश हेजलवुड बहुत मार खाता है. और एक बात है, बेंगलुरु इज मोर ऑफ अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट, सो यू वुड वांट कन्वेंशनल T20 बॉलर्स। जॉश हेजलवुड एक ट्रेडिशनल बॉलर है जो लाइन और लेंथ पे फोकस करता है, मोर ऑफ अ टेस्ट बॉलर। So that's why at Bangalore आयरनी we थी वो stopped him makes more नंबर वन sense. T20 बॉलर है. आईसीसी Because रैंकिंग्स में. last year लास्ट ईयर देखा जाए तो ज्यादातर मैचेस यूएई, इंडिया ऐसी जगहों पे ही हुए हैं। रीस्टॉपली मेक्स मोर सेंस आई थिंक, और एक 1.9 में मिल गया है, आई थिंक इट्स वेरी ग्रेट डील। राइट. फिर विराट कोहली एंड फाइव डू प्लेसी विल ओपन। नंबर 3 रजत पाटीदार who scored a century last year in the playoffs. विल यू प्ले रजत पाटीदार नंबर 3? Yes, लास्ट ईयर वो ही खेला था एज अ सेंचुरी। रजत ओके. पाटीदार at 3, महिपाल at 4, मैक्सवेल एट 5. Maxwell at 5, Dinesh Karthik, then Ahmed, Shahbaz Ahmed at 7, Hasaranga at 8, Topley, Siraj and Harshal Patel. Very good 11, decent 11 I would say. या बट मैक्सवेल आ गया तो आई थिंक मैक्सवेल का और अच्छा। फॉर्म पे डिपेंड करेगा बैंगलोर का सक्सेस. यार अगर मैक्सवेल. मैक्सवेल नहीं भी है तो विल जैक्स आ सकता है। ही हैज अ सेंचुरी इन द 100 लीग, इंग्लैंड का 100 लीग में विल जैक्स स्कोर्ड अ सेंचुरी, सो इज क्वाइट अ पॉपुलर गाय दैट। राइट. Bangalore, what do you think about Bangalore? Are they favorites this year, like every I year? don't see them as I don't see them as favorites because मिडिल ऑर्डर महिपाल नोमरोर है, उसकी जगह कोई दिख नहीं रहा मुझे और स्क्वाड में। एंड देन सिराज का भी रिप्लेसमेंट सिद्धार्थ कौल है जिसका रिसेंटली रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। Hmm. सो अगेन सेम केस एज राजस्थान रॉयल्स, इंडियन बैकअप में मार खाते हैं लोग। और इनके पास कीपर भी कौन है कार्तिक के अलावा? दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, दो ही अनुज कीपर है राव. पूरे स्क्वाड में। हम्म. तो कार्तिक इज प्लेइंग ऑफ कोर्स. ही हैज टू प्ले। ओके. सो या लेट्स टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस नाउ. टाइम बहुत कम मुंबई है हमारे इंडियंस पास. Mumbai Indians will struggle to pick their four foreigners. They have Deval या. Travis, they have Tristan Stubbs, they have Cameron Green, they have Team David, they have Jofra Archer, Jai Richardson, Jason Berendorf. Great names. इनको इंटरेस्टिंग टू टॉप ऑर्डर सी कि सुलझाना पड़ेगा। आई थिंक like we have discussed this before, but obviously the recording didn't materialize. So yeah, Rohit will drop down to number 3 or number 4, and we can see Cam Green and Ishan Kishan opening with either Sky or Rohit coming at number 3 and number 4 respectively. Then we Then can Tilak see, Verma yeah, Tilak Verma at number and 5. one of Tristan Stubbs और Deval Travis at 6। यहाँ पे उनको चूज करना है। 7 पे टीम डेविड एज अ फिनिशर। Okay. Then they have Jofra Archer, he's coming back from injury, इंग्लैंड के स्क्वाड में भी आ गया है वो, सो ही इज फिट। देन 9 10 11 उसमें से एक जसप्रीत बुमराह है। देन एक इंडियन स्पिनर चाहिए राइट. जो उनके पास स्पिनर नहीं है. नहीं है। आई थिंक कुमार कार्तिकेय विल स्टार्ट। Yeah, Karthikeya will start because he has already established himself in the previous edition. So Karthikeya will start because purely because उनके पास स्पिनर नहीं है. और अगर उनको एक एक्स्ट्रा पेसर की जरूरत पड़ती है, अगर पिच इज मोर पेस फ्रेंडली, दे कैन इवन ड्रॉप टीम डेविड और स्टब्स एंड कैन गेट इन जेसन बेरेंडॉर्फ But नहीं, और they जाय want रिचर्ड्स। they want a Indian pace bowler.
क्योंकि who is filling the 11th spot? सात पे टीम डेविड आ रहा है ना, तो हाँ टीम सात डेविड पे है। गोज, वन ऑफ इधर स्टब्स और डेविड गोज आउट एंड बेरेंडॉर्फ और जाय रिचर्डसन कम्स इन। अगर स्विंग मिल रहा है तो बेरेंडॉर्फ खिलाओ, स्टार्ट में बहुत अच्छा बॉलर है। स्विंग नहीं है ज्यादा तो जाय रिचर्डसन विथ स्पेस। No, if you take out either David or Stubbs, then you have to स्टब्स, play Brevis, right? नो, यू कांट फिट इन बेरेंडॉर्फ और जाय रिचर्डसन। Exactly, that's what I'm saying. तो अगर बेरेंडॉफ को हम लोग फिट ही नहीं कर सकते अगर हम ब्रेविस, ये क्या बोलते हैं, स्टब्स या स्टब्स, डेविड को खिला रहे हैं तो। आई वुड से दे मस्ट स्टार्ट विद स्टब्स एंड टीम डेविड, दोनों ही इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं। डेवॉल्ट प्रेविस इज येट टू अपीयर फॉर साउथ अफ्रीका, सो राइट। आई वुड से लेट्स गो विद कैप प्लेयर्स फर्स्ट। अगर वो फॉर्म में नहीं है, अच्छा नहीं खेल पा रहे, तो उसके बाद ब्रेविस लाओ, बिकॉज लास्ट ईयर ब्रेविस 3 नंबर पे खेला था। इस ओके साल सो मेरे को नंबर 3 पे स्पॉट खाली नहीं लग रहा। ओके सो कैम ग्रीन, रोहित, और इस सॉरी, कैम ग्रीन, किशन, रोहित, स्काई, तिलक सूर्य, वर्मा, स्टब्स, स्टब्स, डेविड, डेविड, then who? Then आर्चर, Jofra Archer, Bumrah, then one बुमराह, spinner, obviously. कार्तिक, Then who कुमार fills the कार्तिक। 11th spot? Who fills the 11th spot? डू यू थिंक अर्जुन तेंदुलकर विल प्ले? No, रणजी I don't. ट्रॉफी में सेंचुरी मारा है। I don't think so. देन शाम्स मुलानी, और कोई Yeah, है भी नहीं। ऋतिक शौकीन, बट इज अ or स्पिनर आई Piyush थिंक। Chawla can play. They have a veteran spinner, Piyush Chawla. दे ओनली गॉट हिम फॉर एक्सपीरियंस। Yeah, obviously, but he has wickets in IPL. इवन Last year, अमित but मिश्रा गॉट पिक, इवन अमित मिश्रा गॉट पिक दिस ईयर। yeah, yeah. Who bought Amit Mishra? I think it was, लखनऊ, आई थिंक लखनऊ और yeah, गुजरात। yeah. Or अमित मिश्रा के साथ they also bought in उनदकट. लखनऊ को मिला है अमित मिश्रा एंड जयदेव उनादकट। Yeah, but yeah, who आई fills डोंट the आई 11th डोंट spot? लेस देन 1 मिनट। Quickly tell me who fills the 11th spot for Mumbai Indians. शाम्स मुलानी, आई वुड से शाम्स Shams मुलानी, Mulani. मुंबई प्लेयर, ही नोज वानखेड़े थ्रू एंड थ्रू। Yeah, तो या, maybe Piyush Chawla. I think Piyush Chawla fills that 11th spot for me. टू But मच all स्पिनर्स। obviously they can uh, make that impact substitute.